Hello everyone. Today's topic is Leishmaniasis. It's also called Kala-Azar. So let's start the topic. These are the content. Uh, okay. First is Leishmaniasis and its causative agent. What is Leishmaniasis? Leishmaniasis is a group of protozoal disease. Okay. It is a group of protozoal disease caused by the parasite that is genus Leishmania and transmitted to man by the bite of female phlebotomized sandfly. Okay, it's a vector. It primarily affects the reticuloendothelial system, spleen, that is spleen, liver, and hematological involvement. Kala-Azar is a chronic systemic disease. Kala-Azar is a chronic systemic disease caused by Leishmania Donovani. It's also transmitted by phlebotomous sandfly. Leishmania are the three main forms. First is visceral leishmaniasis, and this is cutaneous leishmaniasis and mucocutaneous leishmaniasis. Now, the visceral leishmaniasis, also known as Kala-Azar, it's caused by Leishmania donovani. It is multiplied and survive within the human macrophage. Okay, morphological form of the Leishmania donovani are two, that is amastigote in human macrophage and promastigote, that is sandfly gut. Now, understanding the transmission and epidemiological determinants. Agent, host, and environment. Agents are parasites survive within macrophage of the human. Okay. Host, कौन से host जो है prevalence that is more chance to develop leishmaniasis, that is poor housing condition, malnutrition, low socioeconomic status, and migration, immunosuppression. Environment जो सैंड फ्लाई को ग्रो होने में हेल्प करता है, दैट इज मोर कॉमन इन दिस environment, that is humid and warm climate. Cracks in wall aid breeding and organic waste favor the sand flies. Now the human reservoir, that is understanding the transmission. Human reservoir, anthroponic disease, human are the reservoir of the infection. Sandfly bite, infected female phlebotomys transmit the parasite through its bite. Vector infection, sandflies becomes the infective after feeding on the Kala-Azar. Okay. Now the next is incubation period. What is incubation period? Incubation period is time gap between exposure, okay, and appearance of symptoms. This is the time gap. Is the incubation period. It is generally 1 to 4 months. Okay. Now the clinical feature. A patient come to the OPD with this feature like prolonged fever, progressive anemia, and splenomegaly, that is enlarged spleen, and weight loss, hepatomegaly, that is enlarged and palpable liver. Skin darkening हो जाता है, that is hyperpigmentation in Kala-Azar, so it's called Kala-Azar. Lab diagnosis, uh, three types, that is parasitological, serological, and hematological. In the parasitological, splenic aspirate and bone marrow aspirate लेते हैं. इसमें स्प्लेनिक एस्पिरेट जो है वो हाईएस्ट सेंसिटिविटी होता है, ठीक है उसका.
सीरोलॉजिकल टेस्ट में RK39 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। ओके, टू डिटेक्ट द ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट एंटी लेशमैनियासिस, लेशमैनिया एंटीबॉडी। ओके, एंड एलाइजा ऑल्सो कंडन। हेमेटोलॉजिकल में पैनसाइटोपेनिया। व्हाट इज पैनसाइटोपेनिया? डिक्रीज द नंबर ऑफ सेल, sorry, wall cell of blood like platelet, WBC, RBC. Now the next is case management. How can we diagnose a patient and how to manage this? Suspected case अगर कोई आया तो उसको पहले हम RK39 टेस्ट करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। फिर अगर पॉजिटिव आया तो इसको ट्रीटमेंट करेंगे, फिर फॉलोअप करेंगे। अगर ये नेगेटिव आता है पर हमको सस्पिशन है, शक है, ये इसमें कालाजार हो सकता है, तो ड्यू टू एनी रीज़न ये फॉल्स आया होगा, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव आया होगा, तो हम क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, पैरासिटोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जो कि स्प्लेनिक एंड बोन मैरो एस्पिरेट लेके हम उसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसको कन्फर्म करेंगे एंड फिर ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी इन द इंडिया। इंडिया के किस किस जगह में सबसे कॉमन है ये चीज़? तो बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड यूपी इज वेरी कॉमन। Now, state-wise Kala-Azar cases, 2020, 21, and 22. Here you can see here that is a case of 20, 21, 22. That is it is decrease by year. ट्रेंड देखोगे 2020 से 22 का, तो ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कालाजार केसेस। नाउ ट्रीटमेंट, very important for pharmacology. First line drug are the liposomal amphotericin B, miltefosine, and amphotericin B deoxycholate. These are the drug for treatment, but it is not a self medication. To not a, it is not a recommendation. Recommendation. Okay. Now the control measure. How to control this? Okay. Factor control कर सकते हैं, and case management कर सकते हैं, and community measure. वेक्टर कंट्रोल में हम क्या करेंगे? इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड रिड्यूस्ड सैंडफ्लाई ब्रीडिंग बाइट साइट, जो ब्रीडिंग साइट है उसको कम कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। केस मैनेजमेंट, कोई आपके पास केस आया तो उसको कैसे मैनेज करना है? अर्ली डायग्नोज करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है और फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग करना है। कम्युनिटी मेजर, कम्युनिटी में फैल गया है, क्या करेंगे? तो IEC, BCC अवेयरनेस, अवेयर करेंगे पीपल को। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइडल बेड नेट, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेड नेट, जो सैंड फ्लाई है उसको बाइट ना करे, तो बाइट ना करेगा तो बाइट नहीं करेगा तो क्या नहीं फैलेगा। सो ये सब मेजर कर सकते हैं कम्युनिटी में, ठीक है। नाउ की इंडिकेटर्स, डिटेक्शन रेट, ट्रीटमेंट कॉम्प्लीशन रेट एंड कवरेज रेट। डिटेक्शन रेट, कालाजार केस डिटेक्टेड बाय सस्पेक्टेड केस, ठीक है, जो स्क्रीन हुआ, it multiplied by 100, it's called detection rate in percentage. Treatment completion rate, treatment completed by case starting treatment, जो start किया, into 100. Coverage rate, household covered by household targeted, जितना target किया this into 100. Now national Kala-Azar elimination program, it is very important to eradicate, or not eradicate, but it's a elimination program. What is the goal of this program? It is a achieve less than one case, less than one case per 10,000 population अगर हो जाए तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नेशनल क्लाइजर एलिमिनेशन प्रोग्राम का एक गोल था।
तो इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, दैट इज सॉरी एक्टिव केस रिसर्च, इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, एल एल आई एन डिस्ट्रीब्यूशन एक नेट है, नेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, एंड मेल्टाफोसाइन दैट इज ट्रीटमेंट ड्रग, एंड स्ट्रेंथन द सर्विलेंस एंड इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बना के रखना। तो these are the now the challenges, okay, challenges, हमारे सामने challenges क्या था, challenges है क्या, तो इसमें क्या है कि जो दैट इज लेसमेनिया डोनोवनी, उसमें ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि बस हमारे पास जो है ड्रग जो है ड्रग जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, सॉरी, जो ड्रग है वो लिमिटेड है, पर ये सभी ड्रग को अगर रेसिस्टेंट हो जाए लेसमेनिया डोनोवानी, तो फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सो ये चैलेंजेस है हमारे लिए, ठीक है। इमर्जिंग ड्रग रेसिस्टेंस, डायग्नोस्टिक लिमिटेशन इन द फील्ड, चेंजिंग द वेक्टर बिहेवियर, नीड फॉर द improved field diagnostics, and operational challenges in the endemic rural areas. So, that is all for today.